Namaskar. Good evening. I'm Subhash Chandra, an interdisciplinary artist. And as I wear a slice of history and civilization through this Banarasi kurta, I'm made to walk to the contours of a country that has stood tall in these 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and how beautifully the nectar of life celebrates and manifests itself to the diversity of history, civilization, arts, culture, well encapsulated by a culture fest called Arth, a culture fest co-powered by Greenply, India's first zero-emission plywood, and Parachute Advanced Coconut Hair Oil, and a special partner, Protein X. Ladies and gentlemen, welcome to India's largest multi-regional culture festival, Season 4 of the digital format. A culture fest that really focuses on so many things, talks you through the diversity to rediscover, revisit, and reconnect. I'm going to be your companion for the next 3 days of riveting panel discussions with eminent veteran panelists, authors, and live entertainment right on your screen. And I guess with me and all of you out there watching us on your screens, we will walk together through this coach, through this quest to discover India in a new light amidst all challenges and adversities. Ladies and gentlemen, Arth, a culture fest that you will be privy to for the next 3 days. We will begin with the ceremonial lamp lighting and the inaugural session. And for that, I'll usher in, I'll welcome the main people, the main man behind all this that you will get to see for the 3 days. First, I want to welcome Dr. Subhash Chandra, well-known member of parliament and the founder of Z Entertainment Enterprise. Now I want to call somebody who's I don't know how to introduce him, but I can only say he's an iconic intersectional artist of this country who represents this country in so many things. He's an award-winning lyricist, a screenwriter or author, poet, marketer, ad man, CEO of the McCann World Group. Ladies and gentlemen, none other than Prasoon Joshi with us this evening to the inaugural of Arth, a Culture Fest. Now I would like to invite Dr. Vikram Sampath, who's the curator of the festival. Vikram is the author of 3 acclaimed books, Splendors of Royal Mysore, The Untold Story of the Vadairs, My Name is Bahajan, and of course so many other bestsellers that he's written. He's established the archive of Indian music. He's a revivalist. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Vikram Sampath on stage. Now, I would like to invite and welcome Mr. Sudhir Chaudhury, who's the CEO and editor-in-chief of Z News, Z Business, Vayan, and DNA. He's the most sought-after news anchor. He's interviewed the biggest politicians, biggest emissaries, and India's biggest political leaders and union ministers on his show. Ladies and gentlemen, presenting you Mr. Sudhir Chaudhury. May I request the dignitaries on stage to step forward and light the ceremonial lamp to inaugurate this quest for culture, Arth, a Culture Fest. Promoted by Z, Arth, a Culture Fest, co-powered by Greenply, India's first zero-emission plywood and Parachute Advanced Coconut Hair Oil, special partner of Protein X, is formally being inaugurated by these wonderful and eminent dignitaries on stage. Dr. Subhash Chandra, Prasoon Joshi, Dr. Vikram Sampath, and Mr. Sudhir Chaudhury.
Thank you so much. And as we get to start to look inwards into our culture, into our civilization through Earth, may I request Mr. Joshi, Dr. Sampath, and Mr. Chaudhury to take their seats and invite Dr. Chandra for his keynote address. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar, everyone. Dear Prasoon ji, Vikram, Sudhir, all the friends, dignitaries present here, and all of you who are sitting at home and watching this Arth, a cultural festival. मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने अपने परिजनों के साथ सकुशल, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। मैं आज का ये अर्थ का चौथा एडिशन या चौथी कड़ी उसको अपने इस देश की पावन भूमि की युवा पीढ़ी को समर्पित करना चाहूँगा। उनको ही आज के और कल और परसों 3 दिन चलने वाले इस कल्चर फेस्ट को समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि जब अर्थ की शुरुआत हुई तब हम सब लोगों ने इसकी आवश्यकता क्या है इसके ऊपर विचार करते हुए ये समझा, सोचा था कि बहुत से लोग हमारे देश में इंडिया को तो समझते हैं लेकिन भारत को नहीं समझते। विशेषकर युवा पीढ़ी तो बहुत ही कम समझती है। तो श्रेयसी और सभी जी की टीम ने और आज जो टीम है जी लाइव की, सबने यही कहा कि हमें आवश्यकता है कि इस देश में जो बार बार प्रश्न उठते हैं, बार बार बातें उठती हैं कि हमारे कल्चरल पुराने एंशियंट इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में जानना, उसके बारे में समझना, उसकी क्या आवश्यकता है आज के युग में। आज के मॉडर्न इंडिया में हमें क्यों पिछली बातों को याद करना चाहिए, अच्छी बुरी कैसी भी हों। लेकिन पीछे की 3 एडिशन आप लोगों ने देखी, सुनी, समझी हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ आप लोगों को पता लगा है कि इसकी ज़रूर आवश्यकता है। और उसके जो पिछले 3 एडिशंस में जो हुआ है और मैंने भी देखा है, उसमें समझ में आया कि इस युवा पीढ़ी को इसकी आवश्यकता थी, जिसकी भरपाई ये फेस्टिवल करेगा। और आगे आने वाले समय में द क्वेश्चन लाइक why should I look at my past, I have to look at my present and my future. These kind of questions will probably be answered. May not be in today's 4th edition, maybe in 5th, 6th, 7th, 8th, 10th and 20th edition. But we need to get all of us of different age group to come on the same page and same thing. And particularly the Generation Z and millennial people must know that what is the relevance of the past with the current and the future. I will ask a question to you. जैसे कि उपनिषदों में एक छोटा सा साधारण मंत्र है, मैंने बहुत से परिवारों में देखा है, उसको भोजन करने से पहले बैठेंगे, बात करेंगे तो हाथ जोड़कर उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसको मैं बताता हूँ कि सीधा वो कहते हैं कि अस्थो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अब इस मंत्र की जो उपनिषदों में लिखा गया आज के दिन को रेलेवेंस है, अर्थ जानेंगे तो है,
समझेंगे तो है। अगर आप कुदरत को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, चाहे किसी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, गुरु नानक को मानते हो, भगवान महावीर को मानते हो, किसी को भी मानते हो, अगर आप किसी न किसी में आस्था रखते हो तो आज भी ये मंत्र का रेलेवेंस है, क्योंकि इसका अर्थ केवल ये है कि हे परमात्मा, मुझे अज्ञानता से ज्ञान, अंधेरे से उजियारे तथा मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने का में सहायक बने, मेरी सहायता करें। अब आज जो इतने साइंटिस्ट विश्व भर में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को 100 साल से ज़्यादा उम्र मिले, 150 साल, 200 साल, तो वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये तो हमारे उपनिषदों में पहले कह दिया कि मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले जाइए, ले जाने में सहायक बनिए। तो इस प्रकार की बात है, और अगर आप समझेंगे तो इसकी रेलेवेंस है, पुरानी चीज़ों की रेलेवेंस है, उसमें अच्छी चीज़ें निकालिए और बुरी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए। यही अर्थ का एक महत्व है। तो इसलिए आज मैं श्रेयसी को और फेस्टिवल डायरेक्टर्स को और बाकी अन्य जी लाइव की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन हम सब के लिए किया। एंड आगे भी आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा, ऐसी मेरी शुभकामना है। Though it is a huge task in front of all of you to make Bharat understand. India, everyone understand through the Google and everything. भारत के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें सामने आ जाएगा इट इज़ इंडिया। तो ये मायने नहीं है। डू वी नो दैट? और बहुत से यंगस्टर्स को, आप लोगों को जो बैठे देख रहे हैं, हम ज़्यादातर कहते हैं कि भारत में 8 भाषाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में 22 भाषाएं हैं, 19,500 डायलेक्ट्स अलग अलग हैं। इसके अलावा केवल ये कुछ 5-6 जानी मानी धर्म या समाज नहीं है इस देश में। 3,000 से ज़्यादा कास्ट हैं इस देश में, 25,000 से ज़्यादा सब कास्ट हैं इस देश में, 645 ट्राइब्स हैं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग विचारधारा की, 13,857 माउंटेन्स इस देश में हैं, इस देश को घेरे हुए हैं, बचाते हैं, बीच में भी हैं। और कितनी रिवर्स हैं आपके हिसाब से? 400 से अधिक नदियाँ इस देश में बहती हैं। तो इस प्रकार का एक विविधताओं से भरा ये देश, इसको जल्दी से पहचानना, जानना, इसके बारे में जानना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अर्थ इस बात को पूरा करेगा, ऐसी मेरी पूरी मुझे आशा और विश्वास है। बहुत से बुद्धिजीवियों से आप मिलते होंगे, मैं भी कभी कभी मिलता हूँ, आगे भी मिलते रहेंगे। उनसे जब भी बात करें, बहुत से लेक्चर देते हैं वो, बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सा ज्ञान बांटते हैं, हम सबको उनसे कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन मुझे तो उनसे सीखने को, अगर उसका जिस्त मैं करूं, बहुत समराइज करूं, एक लाइन में कहूं, तो वो हमेशा यही कहते हैं, इंडिया वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स, नथिंग कैन बी डन इन दिस कंट्री, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी अल्टीमेट रिजल्ट होता है। क्योंकि कारण क्या है उसका? कारण केवल यही है कि वो इंडिया को देखते हैं, पहली बात भारत को नहीं, और इंडिया को जब देखते हैं तो वो नेगेटिविटी के लेंस से देखते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, सोचना, विचारना वही केवल वेस्टर्न है। माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन वहाँ से ही अगर अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ मैं, तो मैं बुद्धिजीवी हो सकता हूँ। हिंदी बोलने वाला तो बुद्धिजीवी भी नहीं हो सकता शायद। दूसरी भाषाएं भारत की बोलने वाला शायद वो भी कुछ नहीं जानता। इस प्रकार की भ्रांति
और हम लोगों को सैकड़ों वर्षों से बताई गई है, पिलाई गई है, जिसके कारण से दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने बच्चों को केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही भेजना चाहते हैं और अपने कल्चर की, अपने बातों की, अपने ग्लोरियस सिविलाइजेशन की कभी बात वहाँ पे नहीं होती, कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं होती। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत को जानना है तो बहुत सी बातें इसके पास्ट की समझनी पड़ेंगी आपको। और मैं तो बड़ा सीधा सा मैं कहता हूँ कि ज़मीन के जुड़े हुए हम लोग हैं, जब अभी भी कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको ज़मीन से जुड़ाए रखना, सच्चाई से, वास्तविकता से हमें जोड़े रखना। कहीं हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो जाएं तो हमें उड़ने मत देना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो छोटी छोटी बात, 3 बातें जो हम और आप रोज़ करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो ऐसे नमस्कार करते हैं। महिलाएं, भारत की महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं। छोटा बच्चा अपने बड़े को पांव छूकर प्रणाम करता है, वो उसके सर पर हाथ रखता है। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन आप समझते हो ये तो बड़ी पुरानी, और ये आज के दिन कौन करता है? हाय हाय पापा, हेलो, ऐसा करके निकल जाते हैं। तो ये उससे क्या रेलेवेंस है, ये पूछते हैं। पर मैं आज आपको बताता हूँ कि तीनों में साइंटिफिक कारण है कुछ न कुछ। नमस्कार करना मतलब मैं ये शरीर मेरा 5 तत्व का बना है, उन 5 तत्व से, यानी 5 उंगलियां 5 तत्व के बराबर, और अपने हृदय के ऊपर रखकर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको आदर करता हूं, आपका सत्कार करता हूं, आपके सामने मैं बो करता हूं, झुकता हूं। हो गया ना रेलेवेंस? इसके साथ जैसे जब मैं अपने बड़े को पांव छूता हूं, यानी नीचे अंगूठे को छूता हूं, और वो मेरे सर पर हाथ रखता है या रखती हैं, तो क्या होता है? 2 शरीरों में एक क्लोज सर्किट सर्कुलेशन बन जाता है। जो विद्या, जो एक्सपीरियंस, जो बड़े बुजुर्ग के अंदर है, वो उस क्लोज सर्किट के माध्यम से छोटे के शरीर में घुसता है, उसकी बुद्धि को निर्मल करता है, उसको आगे करता है। रेलेवेंस है। जब भारतीय महिला अपने माथे पर बिंदी लगाती है, तो ये जो मेडिकल के डॉक्टर इस ऑडियंस में बैठे होंगे या अपने घर में सुन रहे होंगे, वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हिप्नोटिज्म की बात जानता हो और हिप्नोटाइज करना जानता हो, ये कोई साइंस है, ये कोई विद्या या कोई कौशला नहीं है, कोई जो सुनी सुनाई बात नहीं है, तो ये सबसे बड़ा कमज़ोर बिंदु महिला के माथे, मस्तिष्क पे होता है। उसको वो बींध ना सके, उसको वो हिप्नोटाइज ना कर सके, इसलिए इसकी प्रथा चली। अब आज अगर हम नहीं जानते तो उसको धार्मिक रूप से बता दिया, बोले साहब केवल शादीशुदा महिलाएं ही बिंदी लगाती, नहीं, लड़की जब कुछ उम्र के बाद आगे बढ़ जाती है तो सभी बिंदियां लगाती हैं, ऐसी प्रथा है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं, हर एक के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक कारण, कुछ न कुछ चीज़ है। और भाइयों बहनों, मैं तो फ्रेंड्स ये भी कहूँगा कि आज जो हमारे देश में जितने भी बड़े लोग हुए जिनको हम आज भगवान के रूप में भी पूजते हैं, गौतम बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, गुरु नानक देव हुए, महाराजा अग्रसेन हुए, आज के युग में मॉडर्न टाइम्स में ओशो हुए, ये सब इनको मैं साइंटिस्ट कहूँगा। दे वर ग्रेट साइंटिस्ट्स ऑफ देयर ओन टाइम्स। दे ओनली नॉट डिकोडेड द नेचर, they decoded the human science, they decoded the mantra of how to make things happen successfully, make you successful, make you happy. आज
tell me today, and look around yourself. If you know 50 people in your life, look at all 50. And you will find that none of the, even one of 50 people is not there who can say कि मुझे कोई दुख नहीं, I am not suffering due to one thing or the other. Small suffering, big suffering. But everybody will say that yes, I have some suffering. But these scientists of our past 5,000, 7,000, 10,000 years of Bharatiya Itihas, they discovered that what is the cause of suffering and how to remove that, how to get rid of those sufferings. And that's what they gave to our society and to the humanity as a whole. And that's the reason I always say that you must understand your cultural issues, your art, your craft, your music. In India, our music itself has got all scientific things behind it. We used to have, and even today we have. At times when you like a particular music on a particular day, I'm sure, and speakers after me, and especially Prasoon is the master of this game, he will also tell you, probably vouch for it, that हर मौसम की अपनी एक रिदम होती थी, अपना एक राग, अपना एक सिस्टम होता था. दिन का भी सुबह का अलग, दोपहर से पहले का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, रात्रि का अलग म्यूज़िक होता था. तो हर चीज़ साइंटिफिकली वूवन थी इस देश में, इस देश के कल्चर में, इस देश के इतिहास में. वो आपको, युवाओं को जानना बहुत आवश्यक है. एंड अगेन आई रिपीट दैट अर्थ विल be guide you and take you over that journey of our past. Now I'll come to the current times before I end my inaugural speech. And I remember that when Mr. Narendra Modi became Prime Minister of this country in 2014, I happened to be hosting him in 2016 when our group, SL Group, completed its 90 years. On that day, he said that all of you people present here should do your job very well, should do your best in whatever field you are working. And we are going to celebrate in 75 years of India's independence. And that's what the host of today said, 75 years of independence we are celebrating this year. So he gave us the message to not only ask for your rights, because everybody today says, these are my rights and I am fighting for this right. I'm fighting for this purpose and this is my right. You can't tell me not to have this. And things of various kind. But nobody talks about what is my responsibility. So you are the younger generation, you are the people of future. And as our Prime Minister recently said, that next 25 years we are going to work for, and will be known as Amrit Kal, Amrit Ka Samay, means man, 25 years from now we'll be celebrating 100 years of our independence. We have to all prepare for that, and we have to be ready for moving towards becoming again the global guru or Vishwa Guru, and that which was very, very happy, healthy, and very, very wealthy as well. So, to attain those things, my Yuva Sathiyo, you have to do lots of work because we still have some grounds to cover. Lots of things which are not
have not gone good in last 75 years, we have to correct them. For example, आज के जो कानून हैं, which laws we have, they have resulted into what? We have to ask this question. When you say, na, that why do I need to know my cultural history in this modern time? These are the things which make you think that, no, I need to know. Because today's modern laws have resulted into 4.81 lakh court cases are pending in our courts in India. 50 million cases are pending in my courts of India. And there are 1,350 jails in this country with 500,000 people in the jails. We don't want that. And if you don't want that, then you have to go back and look at the laws which existed in the ancient India. We had in our books and in our ancient cultural books, as well as other Vedas, Upanishads, do's and don'ts for the society. They had given solutions to each problems. If you would look at those, you will realize the governments of this time will also realize that when you write the law, the person who is writing the law thinks and writes in English, but then somebody interprets it in Hindi. And during that interpretation itself, there are hundreds of cases which are created. I came to know that in Supreme Court there are more than 50 such case laws where there is only interpretation between maybe and should be. Whether it should be maybe, or what is the difference between should be and maybe, you know. So these are the things which you will find solutions in our past glorious history. It also says, our past history and book says that Raja कितना उसको टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स कितना कलेक्ट करना चाहिए, उसका उन्होंने पूरा फार्मूला वहाँ बताया हुआ है। वो ये कहा कि राजा जितना भी पब्लिक के हित का काम करेगा, उसका जितना, उस पर जितना धन चाहिए उतना ही टैक्स उसको लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा टैक्स पब्लिक से नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हमको पास से मिलेंगी, और आज की जो समस्याएं हैं उनका हल भी आपको उसमें मिलेगा। और इस प्रकार की बात कहते हुए मैं इसमें एक ही कहूँगा कि इंडिया और या भारत मैं कहूँगा continues to contribute not only to our lovely country, our respected country, we are contributing to rest of the world. Today our people have created wealth all over the world for all over the people and everybody. And let's hope that if learn from activities like Arth, we will be able to create wealth and happiness for ourselves also, and remove all the suffering all of us face one time or the other. With this, I will say thank you very much to the Arth team. Jai Hind, Jai Bharat.